Now students, differentiation, what I was saying is differentiation. So what is this differentiation? Let us see. Suppose if I take y as a function of x, what I am doing beta यहाँ पे y as a function of x, क्या consider कर रहा हूँ, y is a function of x, that means y is dependent on x. Try to understand. देखिए पहले चीज तो आप कंफ्यूज मत होइए. Why we are discussing this differentiation? Differentiation is a very important tool, I can say, for mathematics, that is very helpful for our physics. Until and unless you know mathematics, you cannot go with physics बेटा. पहले चीज आप याद रखिए. How I define mathematics, you know, it's a language to understand physics. It's a language to understand. Mathematics is a language to understand physics. जब तक आपको मैथ्स में अगर क्लियर पिक्चर नहीं होगा what is the mathematics concept, तो you cannot move with the rest of the part. तो यहाँ पे अब आपको मैं बता रहा हूँ differentiation, अच्छे से समझिए. इंशाल्लाह by the end of this class you will be very much perfect with the differentiation and its application in physics accordingly. ठीक है, चलिए आइए. तो यहाँ पे देखिए बेटा, y is equals to f of x, हम एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, that is y is dependent on x. So what I do, you know, if I change the value of x, थोड़ा सा मैं value of x change करता हूँ by an amount dx, and so what happens simultaneously, the y value will get changed as dy. अब आपको मैं इसका just in all the books they have mentioned like this: if an value of x changes by dx, the value of y changes by dy. But how it is happening and why it is happening, let us check that. So what I do, you know, I'll take an example. बेटे अच्छे से देखना है आपको. Y is equals to, try to understand what I am doing, x square plus 2. एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, y is equals to x square plus 2. So what I do, you know, if I take the value of x की वैल्यू में 1 मान के चलता हूं, तो what is the value for y? Y is equals to, this is 1 square plus 2. 1 square means how much? It is 1 only, plus 2 is how much? It is 3. Now what I do, suppose this the value what I am getting, suppose it is y1. Next if I take x is equals to 2, x is equals to 2 पे हम वैल्यू निकालते हैं, तो y we substitute as y is equals to, x की वैल्यू 2 रखिए, so what it becomes, 2 square plus 3. So how much it is? 2 square plus 3 कितना हो रहा बेटे? This is 4 plus 3, that is 7. Try to understand what I am explaining. देखिए I have changed the value of x from 1 to 2. That means there is a change in x or not? Yes, there is a change in x. From 1 to 2 the value has been changed, that is dx. Dx itna hoga bete, 2 minus 1, that is 1. So here I am writing dx, there is a change of 1, that is 2 minus 1. Then what happens to the value of y? Y की वैल्यू कैसा चेंज हो रही है? dy की वैल्यू भी चेंज हो गई बेटा. dy की वैल्यू चेंज हुई. What is this change in this value? 4 minus 3, that is equals to, this is 7 minus 3, that is equals to 4. 7 minus 3 is equal to what? If there is a change in the value of x, there is a change in the value of y. So in short, what we are saying is, if there is a change in x, then there is a change in y also. Then this dy by dx is the differentiation of y with respect to x. That means we are differentiating y with respect to x. So therefore, अब आइए students, the definition for differentiation. Definition of differentiation, देखिए बेटा, what the definition I have given here is, if y is a function of x, try to understand each and every line. If y is a function of x such that y is equals to f of x, मतलब y is a dependent function of x, then if the value of x is changed by dx, थोड़ा सा value को हम x की value को change करते हैं by an amount dx, then what happens to the value of y? Value of y also getting changed. So dy by dx is the derivative of y with respect to x. I hope you have understood the definition of differentiation. So beta यहाँ पे in this classes I'm not going to give you the time to what I can say to copy and everything. Just आपको मैं screenshot लेने के लिए कहूँगा. Immediately you have to take the screenshot. After that you can move to the class. ठीक है, take लीजिए इस बोर्ड का screenshot ले लीजिए, then we move. Now come to the application part of differentiation. Application means where we are using this differentiation, that is very important. In physics where we are using, चलिए अब हम देखते हैं बेटा.
uses or applications of differentiation in physics. So first use, we can find the slope of curve or a line. Slope of a curve or a line we can find by using the concept of differentiation. That is, it is very useful to find the slope of a line as well as the slope of the curve. So what is the use of finding the slope of the line in slope of the curve in physics? Because in physics, when the curves are given, you must be in the position, what is the slope of the curve at a particular point? That is also very important thing. So here, the differentiation concept we are using to find the slope of the curve or the slope of the line. Next, students, what we are having here is to find the rate of change of physical quantity. Rate of change of a physical quantity. So this also we can find, that is the rate of change of a physical quantity. That means how the physical quantity is changing with respect to time. आप पढ़े होंगे बेटा differentiation of velocity, rate of change of displacement. So how to find the rate of change of displacement? We use the concept of differentiation. How to find the rate of change of velocity, that is acceleration? Again we use the concept of differentiation. तो यहाँ पे हमारे को जो है ना, ये दो चीजों में बहुत यूज होता है. थर्ड वन अगर हम देखते हैं, थर्ड वन, to find the maximum or minimum value, to find the maximum or minimum value of a function. एक फंक्शन की हमारे को मैक्सिमम वैल्यू या फिर हम मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन की हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वंस अगेन, in physics, where we are going to use this differentiation to find the slope of a curve or a slope of a line. The second one, we can find the rate of change of physical quantity. The second one is the most important application of differentiation in physics. ये बहुत important है बेटा. Second one is very much important in physics, as well as we have having certain functions to calculate what is its maximum value as well as what is its minimum value. We can find out just by using the concept of differentiation. I hope it is clear the uses of differentiation. Again, I repeat, the second use is very, very, very important as far as physics is concerned. अब आइए बेटा हम कहाँ पे, this is what I can say, the differentiation part हम देख चुके हैं. What are the applications of differentiation part we have seen. Now let us go with the formulae. I'm going 5-6 formulae that you have to take the screenshot for that, but the thing here is you have to work only for one differentiation formula. Again, that is a very important. चलिए आइए अब हम देखते हैं. Please take the screenshot for this. No, beta, pay attention. Differentiation formula, if you are going, the first one, that is d by dx, differentiation of x. Try to understand, differentiation of x power n is n into x power n minus 1. I repeat once again, differentiation of x power n is n into x power n minus 1. Next, second one, differentiation of any separate constant. Bete, maximum times you people remembers that a differentiation of a constant is 0. No, try to remove this statement from your mind. ठीक है, differentiation of any constant is not 0. differentiation of any separate constant is 0. जब एक constant separate होता है तब constant 0 बनाएंगे हम. If it is attached with the variable like x, like a variable t, अगर ये इसके attachment में होता है, then 100% we cannot make it is to be 0. ठीक है, अच्छे से याद रखना है. differentiation of any separate constant is 0. Third one, differentiation of sin x. If you are going for sin x का differentiation करते हैं बेटा, तो ये बनता है हमारे लिए cos x. differentiation of cos x, it is minus sin x. Minus sin x. differentiation of cos x, it is minus sin x. The fifth one, differentiation of log x. तो हम इसको लिखेंगे 1 by x. So these are the differentiations what we are going to use in our physics. But again, I say the most important, maximum times we come across of this two. Maximum times, that is differentiation of x power n is differentiation of x power n is n into x power n minus 1, and differentiation of any separate constant is
0. So you please note down this formula. Then we go for how to solve the questions based on differentiation in mathematics first, then how we relate with physics, that I am going to show afterwards. ठीक है, ये लिख लीजिए बेटा फर्स्ट. So I hope you have written. तो अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पे we work on these two formula. This is also important, but the most important working हमारे को जो देखना है ये दो फॉर्मूले पे देखना है बेटा. आइए. Let us go with the first one. I want to find out the differentiation of x power 5. Try to understand. Differentiation of x power 5 we are finding. So how to find the differentiation of x power 5? So can I say that it is same as that of our formula x power n? Just in place of n we are having 5. So the formula is what? N into x power n minus 1. N into x power n minus 1. Okay? So if I take the same question again, d by dx of x power 5. So what we are getting is, students, n value is 5. So therefore n value is 5. So therefore this is 5 into x power 5 minus 1. You can see in place of n what I am doing, I am writing 5. 5 into x 5 minus 1. I hope it is clear बेटा. तो ये कितना हो रहा देखिए अब आप 5 x power 4. आई होप इट इज क्लियर. अब आइए बेटा थोड़ा सा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं वेरिएशन दे रहा हूं मैं आपको. देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 3. x power 4 plus 3, differentiation of x power 4 plus 3. So x power 4 plus 3, how to differentiate this? Let us go with the same method. D by dx of x power 4 plus d by dx of 3. Try to understand. This is d by dx of, I'm just separating the differentiation. D by dx of x power 4 plus d by dx of 3. This is x power 4 plus d by dx of 3. Now students, what is this d by dx of x power 4? बेटा इसको हम अलग से solve करेंगे. ठीक है, x power 4 means, can I go with this formula x power n? So n into x power n minus 1. So therefore this is how much? We can write this as 4 and this is 4. So here 4 minus 1 I have to write. 4 minus 1 plus differentiation of this constant is 0. So it is 4x cube. Differentiation of this is separate constant. You can see this is the differentiation of separate constant. So therefore 4x cube is the answer. I hope it is clear. Now let us go for another one. Like if I find the third one, d by dx of 5x power 6. I want to calculate the differentiation of 5x power 6. So how to find? See student, this is a constant. You can see this is a constant. Don't make it as 0 because the concept I have already given you. The differentiation of any separate constant is 0. It is an attached constant with x. It is an attached constant with x. x से हम ये attach करा हुआ है. That is why we cannot make it as 0. Try to understand. ठीक है, तो ये 5 हम ऐसे रखेंगे बेटा 5. Then we go for the differentiation of x power 6. What I am doing, I am taking this 5 outside and I am writing here d by dx of x power 6. D by dx of x power 6. So again it is of the form x power n. So we can write n into x power n minus 1. So I'll write this is 5 as it is. We solve this part separately. 6. N is how much? Try to understand. N is how much? 6. So 6 into x power 6 minus 1. So 5 6 the, it is 30. 5 6 the 30 and this is x power 5. I hope it is clear for you how to find the differentiation. So this differentiation examples I have shown you with respect to x. We are doing the differentiation with respect to x. So what happens when the function is given in terms of t? Function is given in terms of t and we have to find out the differentiation with respect to t time. वो भी देखते हैं बेटा. तो आप x power ये formula very important है जो हम कर चुके हैं यहाँ पे. What we have done here, d by dx of x power n is n into x power n minus 1. I hope the concept is clear. Please take down the screenshot, then we move to the next one.
वहां स्टूडेंट को एंट्री दो। Now students, let us go for the another concept, that is differentiation for t. चलिए बेटा, if suppose the question is given as, if, try to understand, if x is equal to t cube, find dx by dt, dx by dt. Suppose this is the question given to you, then how to find dx by dt? Try to understand, student. We are differentiating x. Here you can see the differentiating x with respect to time. I repeat once again, we are differentiating x with respect to time. We can differentiate. Try to understand. This is dx by dt. ये क्या है बेटा? dx by dt. Now here, instead of given as x power n, they have given as t power 3. x power n की जगह पे क्या है? t power of 3. तो फॉर्मूला हम तो सेम ही यूज करेंगे. विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज? ट्राई टू सी. ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे, अच्छे से देख लीजिए. एक बार लिख रहा हूँ, n into x power n minus 1, n into x power n minus 1. Now अगर इसी को मैं लिखता हूं d by dx of t power n, d by dx of t power n, then in place of x we can write t. So therefore n into t power n minus 1. So the same thing I can apply. So here n into t power n minus 1. तो अब आइए बेटा हम कैसा फाइंड आउट करेंगे इसको. This is 3, n is 3, t power 3 minus 1. Here it is 3, no? So that's why I'm writing 3 minus 1, that is 3t square. I hope it is clear. Simple है, ठीक है. और एक एग्जांपल देता हूं बेटा, ये 1, ये सेकंड. If x is equals to t square plus 4, t square plus 4. अब हम साथ में 4t और थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना रहा हूं बेटा. चलिए, t square plus 4t plus 1 plus 5, not 1, it is 5. So 4t. तो अब आइए बेटा यहां पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे. फाइंड dx by dt. Find dx by dt. Now what is this? I am differentiating now dx by dt. देखिए बेटे, t square is there. t square means it is t power n का फॉर्मूला बन गया. So n into t power 3, t power n minus 1. So what we are getting here is 2 t power 2 minus 1 plus, this is 4 as it is, because 4 we cannot make it as 0. The reason here, 4 is an attached constant, it is not a separate constant. 4 is an attached constant, so it cannot be 0. तो आप 4 ऐसे ही रखेंगे. अब आप t is there, मतलब what do you mean by t? क्या मतलब है बेटा t का? मतलब t का पावर 1 है. तो what I do, n की वैल्यू 1 रखेंगे हम यहाँ पे, n वैल्यू 1 रखेंगे. So what we are getting here, 1 into t power, try to understand, and n is 1 into t power 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1. So plus, what is this 5? Differentiation of 5. 5 is a separate constant, so बिना झिझक के हम लिख देंगे 0. Differentiation of a separate constant is 0. चलिए सिंप्लीफाई करते हैं बेटा. This is 2. What is this? t 2 minus 1, so it is just t plus. Now beta, this is 4. Try to understand, this step is very important. T power 1 minus 1, t power 0 it is. T power 0. This is becoming t power 0. T power 0, any number power 0, it is 1 except 0. So it is any number power 1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, any power
1 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, टी पावर 0। तो टी पावर 0 जब होता है, या 2 पावर 0 होता है, या 3 पावर 0 होता है, वी टेक इट एज 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 1, आंसर इज जस्ट 1, प्लस दिस इज 0 एज इट इज। तो आंसर लिखेंगे हम 2t प्लस 4। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा मैं स्ट्रेस कर रहा हूं बेटे, फिर से एक बार देख लेना है आपको। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर? अगर मैं देखता हूं डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, क्या आया बेटे हमारे को, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें, जरा गौर से देखिए क्या स्टेप आया, आंसर हमारे को 2t आया। दिस इज यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर इट इज 2t। अब हम, मैं आपसे ये पूछा, अगर इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टी, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टी, तो अब आप डिफरेंशिएशन ऑफ टी देखिए, टी पावर 1, हम इसको इंटरनल सॉल्व करें, 1 इंटू टी पावर 1 माइनस 1, दिस विल बिकम 1, 1 माइनस 1 इट इज 0, टी पावर 0 1 होता है बेटा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू 1 आंसर इज 1। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ टी करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। देन वी गो फॉर हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट और यू हैव रिटन। तो बेटा फिर से देखिए, मैं अब यहाँ से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ अ गिवन फंक्शन। अब नाउ हाउ व्हाट वी आर सीइंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको मैथ्स से थोड़ा सा फिजिक्स के तरफ लेके जा रहा हूं, एंड दिस विल बी एक्टिंग एज ए टूल फॉर सॉल्विंग द फिजिक्स प्रॉब्लम्स। देखिए स्टूडेंट, फॉर राइटिंग द यूजेस, when I was writing the uses, at that time I had given you the second use to find the rate of change of a physical quantity, so we can use the concept of differentiation. अब हम one by one problem करेंगे बेटा, based on physics, how these questions, how this concept of differentiation we are using in differentiation. तो फर्स्ट प्रॉब्लम, आइए फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ स्टूडेंट्स, आइए बेटा। फर्स्ट प्रॉब्लम यू कैन सी ऑन द बोर्ड, रीड द क्वेश्चन। See the question. The position of a particle as a function of time is given by x is equals to t square plus 5t, x is equals to t square plus 5t plus 2. So find the instantaneous velocity at t is equals to 2 seconds. So this is a physics question, and most of the question, this question has been asked in the competitive exams. So I have taken this question, or I have selected this question for differentiation. So the question asked is, what is velocity? What is the instantaneous velocity? The question is, what is the instantaneous velocity? So you should know instantaneous velocity is differentiation. That is what I can say, instantaneous velocity as per physics हम कैसा define करते हैं, थोड़ा उसको याद रखना है। So instantaneous velocity is the velocity at the particular instant of time, और उसका फॉर्मूला होता है बेटा dx by dt। अब फॉर्मूला आपको याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, नथिंग, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन दैट वी आर लर्निंग, अगर आपको वो चीज आ जाती है, हाउ यू आर रिलेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन विद फिजिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम उसी को सीख रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे सर हम आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो हरगिज नहीं मालूम होगा, दैट्स व्हाई यू हैव जॉइन्ड द क्लासेस। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ बेटे, मैं आपको जो है ना कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलोसिटीज, मोमेंटम, फोर्स, ये नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आई एम नॉट टीचिंग दैट, जस्ट आई एम शोइंग यू हाउ टू अप्लाई दिस मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आपको, बट वंस यू गो थ्रू दैट चैप्टर, नो, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। ये सारी चीजें आने वाले हैं हमारे को इंशाल्लाह आगे जाके। तो x is equals to t square plus 5t plus 2. Now what I am doing here is
Here velocity is asked, instantaneous velocity, and instantaneous velocity is given by dx by dt. Instantaneous velocity का formula होता है बेटा dx by dt. That means we have to differentiate x with respect to time. Differentiation x with respect to time से हम differentiate करेंगे. चलिए हम differentiation करते हैं बेटा d by dt. What is x? X is this part. So I take t square plus 5t plus 2. देखिए बेटा कुछ भी नहीं किया, आई हैव डन नथिंग, जस्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला आई शुड नो dx by dt. उसके बाद dx by dt इज व्हाट t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2. ये जो x है ना, जस्ट आई हैव रिप्लेस्ड हियर. तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर. दैट मींस ये जो है ना बेटा ब्रैकेट के बाहर है. दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ 5t, डिफरेंशिएशन ऑफ 2. So differentiation of t square, already मैं आपको याद रखो बोला था, differentiation of t square it is 2t. So I'll write directly in place of this differentiation of t square I will write 2t plus, try to understand बेटा, ये 5 it is an attached constant, 0 नहीं बना सकते हम. Differentiation of t देखना है बेटा हमको, differentiation of t कितना है, it is 1. So I will take it as 1 plus differentiation of it is a separate constant, तो हम ये 0 बना देंगे. So what we are getting here students, 2t plus 5. This is the velocity beta. ये velocity है. But the question asked, you can see the velocity we have to find at t is equals to 2 seconds. Time हमारे को दिया हुआ है 2 seconds हमारे को find out करना है. तो v is equals to 2 into this is t की जगह पे 2 plus 5 कर दीजिए. So 2 plus 2 into 2 4, 4 plus 5 it is 9 units. I'm not writing meters per second because the units are not mentioned here. So just I'm writing units. Okay. I hope it is clear. So students, before going to the next question, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं बेटा कि अब आज जो है यू हैव ज्वाइन द क्लासेस, दिस क्लासेस यू हैव ज्वाइन. तो सबसे पहले आपसे दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि भाई फिजिक्स इज टफ. नो, you are whatever the problems you are facing with physics, no, it is not actually with physics. It is what you don't know the concept, you don't know the mathematics behind physics. That's why you are facing problems in physics. तो आप आज से डर हटा दीजिए बेटा. लाइक वी आर, आई एम टेकिंग टुडे इज द फर्स्ट क्लास, तो आप जो है ना अच्छे से समझ कर आगे बढ़ना है. दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डिफरेंशिएशन कांसेप्ट. लाइक वी आर हैविंग इंटीग्रेशन, वी आर हैविंग ट्रिग्नोमेट्री. सो मैं यहाँ पे क्लास में वो जो कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास, जो कॉन्सेप्ट्स पहले से, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, ग्राफ्स है, इंटीग्रेशन है, दैट थिंग्स आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास. मैं इंशाल्लाह आपके लिए पूरे क्लासेस जो भी मैं कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा, इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, मैं पूरे क्लासेस में बनाऊंगा और आपके पास आपको उसकी लिंक भेजाऊंगा, आप उसको आप फॉलो करिए. The basics concepts of mathematics, because here see students, here in my class many students have joined alhamdulillah. तो हर एक स्टूडेंट का एक लेवल नहीं है बेटा, try to understand. So I cannot go always with the basics. मैं inshallah am with the students who don't know the basics also, but indirectly मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो. लाइक आज मैं जो बना रहा हूँ इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड, तो यही रिकॉर्डिंग मैं जैसे इंटीग्रेशन मैं लूंगा और इंटीग्रेशन का आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेजा दूंगा. तो आप उसको जो है ना बेटे थोड़ा सा टाइम देकर अपना फ्री टाइम में वो लेक्चर को आप देख लेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल बी वेरी मच परफेक्ट विथ the concepts of mathematics. So how I define, you know, mathematics is a language to understand physics. तो अगर आप कोई चीज के कहीं पे जा रहे हैं, अगर वहां की लैंग्वेज नहीं मालूम है, तो how you are going to survive, you are going to face difficulties, right? तो यहाँ पे फिजिक्स में भी वैसी है बेटा, जब तक कि आपको मैथमेटिक्स परफेक्ट नहीं होता है ना, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड फिजिक्स. तो आपसे आप ये बोलना छोड़ दीजिए हमारा फिजिक्स वीक है. नो, योर फिजिक्स इज स्ट्रॉन्ग. आई नो योर फिजिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो आप जो है मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो इंशाल्लाह दैट विल बी कवर्ड अप. ठीक है. तो दिस इज द क्वेश्चन व्हाट आई हैव गिवन यू, दैट आई हैव रिलेटेड डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन रिलेट करा बेटे मैं फिजिक्स से. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम. आइए, see what is the next question given. Given s is equals to ut plus half at square, where u and a are constants. u और a दोनों constants है बेटे. So we have to obtain the value of ds by dt. चलिए हम find out करते हैं.
S is equals to ut plus half at square. What we need to calculate, students, जरा थोड़ा सा देखिए बेटा, we need to calculate ds by dt we are calculating. So that means we are differentiating x, we are differentiating s with respect to t. तो अब आप आइए d by dt of s. What is s? This is s. लिख दीजिए ब्रैकेट में ut plus half at square, ut plus half at square. तो अब हमको डिफरेंशिएशन करना है बेटा. चलिए अब हम डिफरेंशिएशन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस dt? dt इज आउटसाइड द ब्रैकेट, दिस dt इज फॉर दिस एज वेल एज फॉर दिस. तो u is constant as per the question. देखिए वहां पे u and a are constants, so u is constant. So what I do, you know, I'll write u as it is. Differentiation of t, differentiation of t, I know it is 1 plus half a डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब हम देखेंगे तो पता है बेटा मेरे को, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इट इज 2t. तो ओवर प्रॉब्लम खत्म हो गया हमारे लिए. दिस टू गेट कैंसल्ड, सो इट इज u प्लस 80, u इंटू 1 u 80. ठीक है. अब आइए बेटे, ये तो हम ds बाई dt हम फाइंड आउट कर चुके हैं. वी हैव अप्लाइड अवर मैथमेटिक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन टू फिजिक्स. लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, नहीं, differentiation of displacement with respect to time, it is the velocity, it is the velocity. So therefore I'll write it is v, dx by dt, ds by dt, it is velocity. So I'll take it as v लूंगा मैं, और ये बनने वाला है मेरे लिए u plus at. कुछ याद आया आप लोगों को? What is this? This is the first equation of kinematics. So in this way maths and physics both are related to each other, they are relatives, I'll say. ठीक है. तो दोनों चीजें आना चाहिए. हम एक फंक्शन कर रहे हैं, एक को बुला रहे हैं, दूसरे रिलेटिव को नहीं बुलाए तो कैसा दिखेगा? तो मैथ्स भी होना है हमारे को, फिजिक्स भी होना है बेटा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज, यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन. The momentum of a body is p is equals to 4t square plus t. Its units are given kg meter per second. Find the force acting on the body at t is equals to 2 seconds. तो यहाँ पे t is equals to 2 seconds पे हमारे को फोर्स निकालना है बेटा. तो मोमेंटम दिया हुआ है. चलिए आइए, प्लीज इफ यू हैव नॉट कॉपी टेक द स्क्रीनशॉट या कॉपी कर लीजिए फर्स्ट. एंड after ending the session, this is the last question what I am taking for today's class. After ending of the class, students, please give the feedback for today's class. Like feedback in the sense about the font size, about the clarity of the board, about what I can, the clarity of the voice. ये चीजों का थोड़ा सा मेरे को फीडबैक देना है बेटा. और इन्हीं कुछ चेंजेस चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. इट्स आई एम फॉर यू, आई एम विथ यू. ठीक है. आई एम फॉर यू एज वेल एज आई एम विथ यू. तो थोड़ा सा आई नीड योर सजेशन टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ माई ऑनलाइन क्लासेस. ठीक है. ठीक है. चलिए कॉपी कर लिया आप लोग. तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब. एंड रिमेंबर टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है बेटा. तो आप नोट्स भी रख लेना है, रनिंग नोट्स बना सकते हैं आप, या नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में बनाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू. बट व्हाट आई सजेस्ट यू टेक गो फॉर द रनिंग नोट्स. जल्दी जल्दी आप लिखना भी है, सुनना भी है, देन दैट विल इंप्रूव योर व्हाट आई कैन से द कैचिंग पावर बढ़ता है बेटा उससे. ठीक है. चलिए आइए. द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज p is equals to 4t square plus t. p is equals to 4t square plus t. 4t square plus t. Find the force acting on the body at t is equals to 2 seconds. बेटा फोर्स का फॉर्मूला मालूम है आपको? Those who have joined the last class उनको पता होता है. That is force is dp by dt. That is differentiation. याद नहीं है, छोड़ दीजिए, leave it. तो डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएशन हम मोमेंटम को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन वी आर गोइंग टू गेट फोर्स. तो अगर मैं इसको, मैं जनरली आई यूज्ड टू से दिस, अगर मैं फोर्स को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करूंगा बेटे, फोर्स को फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करता हूं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलूंगा, बिकॉज हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलूंगा मैं यहाँ पे. ठीक है. अगर उसी तरह से अगर मैं मैथमेटिक्स से मैं बात करूंगा, मैथमेटिक्स के एंगल से मैं बात करूंगा, तब मैं इसको डिफाइन करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. दोनों मेथड से आप डिफाइन कर सकते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स.
और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो ए फोर्स। तो एक फिजिक्स का डेफिनेशन दिया मैं आपको, एक मैथमेटिक्स का डेफिनेशन दिया हूं मैं, ठीक है। चलिए अब हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, आइए। फोर्स इज इक्वल्स टू डी, व्हाट इज पी, पी क्या है बेटा, देखिए 4t² प्लस टी। बेटा ये अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो नो नीड टू वरी, बिकॉज वंस वी स्टार्ट द लॉज ऑफ मोशन, उसमें ये कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ मोशन में, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी अंडर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये कहां से आ गया, बल्कि आप परेशान मत होइए, हम ये फॉर्मूले पे स्ट्रेस नहीं कर रहे बेटा, हम आपको जो है ना, आपको कॉन्सेप्ट हाउ टू इन्वॉल्व यूर सेल्फ फॉर डिफरेंशिएशन फॉर सॉल्विंग द फिजिक्स क्वेश्चंस में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये चीजें आपको पता हो जाती है व्हेन यू स्टार्ट द चैप्टर, ठीक है। असल चीज ये है। सो dp, d as it is, p I have written by dt बेटा। तो ये d by dt of 4t² plus t, 4t² plus t। नाउ बेटे what is this dt, मतलब d by dt मतलब it is attached with 4t² as well as t। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं बेटा। this is 4 t square, differentiation of t square, that is 2t, that's why I have written separately, you know, maximum times in physics differentiation of t square and differentiation of t बहुत बार आता है बेटे, आप भी गौर कर रहे होंगे, तो ये चीजें आपको याद रहना है ओरली, ठीक है। तो 4 t square differentiation I will write it as 2t, t square differentiation is 2t, t square का differentiation 2t हो गया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ टी, टी का डिफरेंशिएशन बेटा 1, तो ये हो गया 1, तो ये बन रहा मेरे लिए 8t प्लस 1। लेकिन फोर्स तो चाहिए हमारे को, लेकिन कुछ टाइम भी तो दिया हुआ है ना, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे हमारे को फोर्स निकालना है बेटे। तो एट t इज इक्वल टू, तो F इज इक्वल टू t, ये 2 प्लस 1, दैट इज दिस इज 16 प्लस 1, दैट इज 17 न्यूटन्स। मैं यहां पे लिखूंगा 17 न्यूटन्स, व्हाई, बिकॉज मोमेंटम इज गिवन, इट इज इट्स यूनिट्स इज गिवन इज केजी मीटर पर सेकेंड, तो इसका ऐसा यूनिट दिया हुआ है, तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा हमारे को ऐसा यूनिट्स में ही रहेगा। सो एफ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी, हाउ मच, 17 न्यूटन इज द आंसर। चलिए देख लीजिए, इसको कॉपी